Yeah, good evening everyone. ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଏସ୍ ଆସିଛି? Okay. Question number 54 ରୁ କରିବା. Okay. Question number 54. Consider the following statement regarding Montreal Protocol on substances that deplete ozone layer. Question पढ़ो. Under the Kigali Agreement, parties to Montreal Protocol will phase down production and consumption of hydrofluorocarbon. Protocol is to date the only UN treaty under that has been ratified every country on the earth, all the UN member of state. India has failed to meet the phase out target of all the ozone depleting substance as per Montreal Protocol. Come answer. भाई स्लो आसुची. देखो फास्ट कथा तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टा ओजोन लेयर डिप्लीशन कथा हमरे कहूची. केबे आसला ना 1987 रे आसीतला. हमें डिस्कशन ऑलरेडी करथिले. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन. ये ओजोन लेयर डिप्लीट केमिति हुए हमें कहिथिले क्लोरोफ्लोरोकार्बन हला तो जोटा कि जाई कि जो फ्री ऑक्सीजन टा को ऑब्जर्व करिया जो ओजोन लेयर फॉर्मेशन हे पने ओजोन फॉर्मेशन हे पने तुमको मेकानिज्म लास्ट क्लास रे कहिथिले. ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो देछि अंडर किगाली एग्रीमेंट पार्टीज टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विल फेज डाउन the production and consumption of the hydrofluorocarbon. ठीक अच्छे से. Second, the protocol is to date the only UN treaty ever that has been ratified every country on the earth, all the UN member state. Yes, इटा ठीक अच्छी. तो मने रखिबो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गोटे प्रोटोकॉल जो थिरे कि यूनाइटेड नेशन रो ऑल मेंबर कंट्री एटा को रैटिफाइड करछन. ओके तो सेकंड स्टेटमेंट हमर ठीक अछि. इंडिया हैज फेल्ड टू मीट द फेज आउट टारगेट ऑफ ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस एज पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. फेल हो. इंडिया सक्सेसफुली मीट ऑल द फेज आउट टारगेट. ओके तो एटा हमर कोन अछि रॉन्ग अछि. ओके तो तीनटा तमे रिमूव कर दियो. आंसर कोन हम 1 and 2 हिजो. ओके तो तारो लास्ट स्टेटमेंट हम देखिए दो. So ozone depleting substance amendment rules has issued
जोटा कि अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये जो क्वेश्चन देछि प्रिवेंशन एयर पोल्यूशन हो एटा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ओके 1986 तो सेटा तमे मन रखियो ओके आ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केबे आसीथिला ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तमरो मन रखिबो 1987 रे आसीथिला ओके 15 सेप्टेम्बर आमर ओजोन डे हिसाब रे एटाई परीक्षा रे पडुची 15 सेप्टेम्बर 1987 तो जोटा कि ओजोन डे एटा को ऑल द यूनाइटेड नेशन रो मेंबर मैन रैटिफाइड करिछन इंडिया होची गोटे पार्टी टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिंस 1992 तो जोटा कि हमरा हमें फेज आउट मैनर रे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हमरा को गुडा को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हमें कहले ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन इवन इफ तमर टायर इंडस्ट्री बाहर ची एरोसॉल रो तमर जो बाहागर जो फोम यूज करजे सेथरु भी हमरा बाहर के हमरा ओजोन लेयर को डिप्लीट करजे ओजोन लेयर डिप्लीट हेले कोन हबो हमें डिस्कशन करिथिले जे ओजोन लेयर डिप्लीट हेले अल्ट्रावायलेट रेट जोटा ऑब्जर्व हे जाउतला ओजोन फॉर्मेशन रे सेटा आर सरफेस को आसले स्किन कैंसर हबो तमरो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर डिक्रीज हबो ए सब गुडा हमरा ओके तो बुझि परले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आवडे पडितला ओजोन लेयर मते कमेंट सेक्शन में कुहा ओजोन लेयर टा को यूनिट रे मेजर करा जाय ओजोन लेयर टा को यूनिट रे मेजर करा जाय कमेंट सेक्शन में कहबो द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर जो हम कहूचे consider the following statement with reference to ozone layer depletion the thickness and the thinning of ozone layer are uniform all over the earth ozone is present only in the upper atmosphere of the atmosphere uppermost layer of the atmosphere okay Then Kyoto Protocol is seen as a landmark environmental agreement that aims to regulate production and consumption of 100 man-made chemical referred to as ozone depleting substance. कौन हमारा correct answer? पचाची कोड़ा incorrect पचारे चे. Which are incorrect? तो देखो तीनटा को इनकरेक्ट प्रथमे द थिकनेस एंड थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द अर्थ नो ओजोन लेयर तार मैक्सिमम तमे देखिबो जदी इक्वेटर रीजन रे तमे जदी देखिबो हमर अंटार्कटिका ए सब रीजन रे हमर ओजोन होल हे जेछि सो तार थिकनेस वेरी लेस तो एटा नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द अर्थ सेकंड ओजोन टा हमर को लेयर परीक्षा रे पड़ितला ओजोन टा हमर स्ट्रेटोस्फियर रे देखा जाय नॉट अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर तो एटा स्ट्रेटोस्फियर रे ओजोन टा हमर देखा जाय ओके तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग अछि थर्ड स्टेटमेंट जो देछि क्योटो प्रोटोकॉल इज सीन एज ए लैंडमार्क एनवायरमेंटल एग्रीमेंट ना क्योटो प्रोटोकॉल में कोन कहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल टा कोन ना कंट्रोल ऑफ हमर ग्रीन हाउस गैसेस हमें डिस्कशन करथिले 6टा ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर जो हेक्साफ्लोराइड परफ्लोरोकार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आउट हमरला एबे नुवा ऐड हेछि नाइट्रोजन टेट्राफ्लोराइड
ओके मु जो क्वेश्चन पचारि जे ओजोन लेयर रो थिकनेस ये सब कोथले मापा जाए डॉप्सन यूनिट ओके तो डॉप्सन यूनिट तो यहाँ भी आम देखिले तीन टा रंग अच्छे ये क्योटो प्रोटोकॉल नु एटा होची मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तापरे फर्स्ट स्टेटमेंट जो दीटा हमर रंग अच्छी तो तावर एक्सप्लेनेशन टा मुझे कहि दउची तो ओजोन लेयर आम देखिले gradually thinning of the ozone layer present in the upper atmosphere. Thickness of the ozone layer varies from any day, any location. Ozone layer depletion consists of much larger springtime. तो स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन एटा देखिलो पोलार रीजन रे हमर वेरी थिनिंग से ओजोन होल होची ओके आ कोडा ओजोन होल करूछंती ना रिफ्रिजरेंट हैला सॉल्वेंट हैला प्रोपेलेंट हैला फोम ब्लोइंग एजेंट है तो युवा हमर ओजोन लेयर तुम जब मिड लैटिट्यूड देखिबो ऑस्ट्रेलिया ओजोन लेयर इज थिन तुम अंटार्कटिका रे हमर दीटा जगह रे हमर ओजोन लेयर टा वेरी थिन गोटेला ऑस्ट्रेलिया गोटेला अंटार्कटिका ए रीजन रे हमर ओजोन लेयर टा वेरी थिन आउ तापरे हमर ओजोन लेयर टा स्ट्राटोस्फीयर रे देखा जाउछ जनरली ट्रोपोस्फीयर रे जदी हमर ओजोन लेयर देखा जिवो ओजोन आसीबो तो वेरी बैड जदी हमर स्ट्राटोस्फीयर रे देखा जिवो इट इज गुड ओके तो हमरा सेटा जो क्योटो प्रोटोकॉल इज नॉट ए लैंडमार्क एग्रीमेंट इट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओके तो आंसर कौन है ताले सब गुडा को भूल अछि ऑल थ्री आर रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन 56 consider the following statement about green climate fund green climate fund उपरे क्वेश्चन थर्ड पॉइंट आम कहले क्योटो प्रोटोकॉल नो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओके कौन हम ग्रीन क्लाइमेट फंड टा कौन पे इट इज एम टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्री टू अडॉप्शन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर climate change. It is created under Kyoto Protocol for mitigation of the climate change. Green Climate Fund is mandated to invest 50% of its resource to mitigation and 50% to adopt the grant equivalent. देखो ग्रीन क्लाइमेट फंड तो मेन काम कौन डेवलपिंग कंट्री मानकू पैसा दबो असिस्ट करिवो पैसा दबो इन अडॉप्शन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज तो आम कहले क्लाइमेट चेंज जो होची तो आपे रिस्पांसिबल को माने डेवलप कंट्री माने कारण से मानकर एमिशन जोगु आज यही क्लाइमेट चेंज हेछि तो डेवलप कंट्री माने पैसा देबे तो से पैसाटा गोटे ग्रीन क्लाइमेट फंड रे रहिबो सेही पैसाटा हमर डेवलपिंग कंट्री यूज करा जिवो हाउ टू मिटिगेट एंड टू काउंटर क्लाइमेट चेंज तो यूएस यूके एमाने जो डेवलप कंट्री माने रहिले कारण से माने इंडस्ट्रियलाइजेशन जोगु ही हमर ए जो कंडीशन आसी छे क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग से माने रेस्पोंसिबल तो से माने पैसा देबे एटा यूज करा हबो कोठी डेवलपिंग कंट्री तो इट इज क्रिएटेड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल नो तो एटा क्योटो प्रोटोकॉल रे हमरो चेंज है जो तैयारी है नतले मु कहबी नेक्स्ट होची जीसीएफ मैंडेटेड टू इन्वेस्ट 50% ऑफ इट्स रिसोर्स टू मिटिगेशन एंड 50% टू अडॉप्ट द अडॉप्शन इन ग्रांट इक्विवेलेंट तो जति पैसा दिया जिवो 50% हमर अडॉप्शन और 50% हमर मिटिगेशन रे यूज करा जिवो तो अडॉप्शन कौन ना तुम जो ग्रीन क्लाइमेट रिलेटेड आम टेक्नोलोजी नब जमीक आम कहले आम कहे इंडिया सोलार पावर उपर आम इम्पोर्टान्स दूची कहीचे आमर 2030 सुधा जिते आमर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हम
50% रिक्वायरमेंट आम कौन कौटू नवा ना रिन्यूएबल एनर्जी पंचामृत आम जो कही तो पंचामृत रे हमर कौन वन ऑफ द टारगेट होची 50% हमर एनर्जी रिक्वायरमेंट तो आम कौन करवा ना रिन्यूएबल एनर्जी रु नवा रिन्यूएबल एनर्जी रु नवा बाय 2030 सुधा ओके आ गोटे आम कही काली नेट कार्बन एमिशन 0 2070 सुधा ओके तो ये सब गुड़ा आम कहे 50% रिन्यूएबल एनर्जी 2030 सुधा तो जीसीएफ इज मैंडेटेड टू इन्वेस्ट 50% एटा ठीक अच्छी ओके जस्ट मुझे तुमको देखिए रोज आंसर सो ग्रीन क्लाइमेट फंड टा हमर एस्टैब्लिश 2010 रे टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन अडॉप्शन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज जीसीएफ इज करेंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट डेडिकेटेड मल्टीलैटरल क्लाइमेट फंड ओके तो जोटा कि financing mechanism to support developing country in achieving reduction their greenhouse gas emission तो एटा हमर कोठी हितला ना ग्रीन क्लाइमेट फंड एस्टैब्लिश विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC GCF is based in Incheon साउथ कोरिया ओके तो फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC अंडर एटा हमर स्टार्ट हितला तो जोटा कि हमारा होची कोन बेस्ट इन इंचन साउथ कोरिया तापरे गवर्न बाय हमारा बोर्ड ऑफ 24 मेंबर सपोर्टेड बाय सेक्रेटेरिएट ओके तो सेति भाई हमर कोन होबो ना दुईटा रंग अछि तो एटा क्योटो प्रोटोकॉल न created by UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change okay next question question number 57 consider the following statement about Kyoto Protocol and Paris Agreement Kyoto Protocol और Paris Agreement ऊपर हमारा question कौन तो दीटा का जानी चाहिए क्लाइमेट चेंज रिलेटेड गोटे प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल रे हमरा ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को केमती कंट्रोल करा जिवो पेरिस एग्रीमेंट रे हमरा कुआ गले जो टेंपरेचर अछि 1.5 डिग्री भीतर हम लिमिट करबा कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल एरा तापरे हमरा गोटे $100 बिलियन रो गोटे क्लाइमेट फंड तैयारी करा जिवो तो जोथरे कि हमें डेवलपिंग कंट्री माने को हेल्प करबा टू तांकर क्लाइमेट कंट्रोल करिया पे माने क्लाइमेट जो चेंज होची ताको केमती मिटिगेशन करिया पे ओके तो ए सब गुडा हमरो थिला पेरिस एग्रीमेंट जोटा कि हमें कहूचे कॉप 21 बोली कहूचे सीओपी 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 बोली हमें कहूचे ओके so consider the following statement about Kyoto Protocol and Paris Agreement. Kyoto Protocol required only developed country to reduce emission, while Paris Agreement called on the country to set the emission target. Both of them fall under the framework of UNEP. प्रथमटा ठीक अच्छे ओके क्योटो प्रोटोकॉल कौन कहला क्योटो प्रोटोकॉल कहला जे ओनली डेवलप कंट्री टू रिड्यूस देयर एमिशन ओके ओनली डेवलप कंट्री रिड्यूस देयर एमिशन किंतु पेरिस एग्रीमेंट रे कौन कहला सब कंट्री को कह जायतिला जे तांको गोटे टारगेट दिया जायतिला जोटा को हम कहूचे एनडीसी परीक्षा रे यूपीएससी प्रीलिम रे पढितला एनडीसी रो फुल फॉर्म कौन ओके और आईएनडीसी भी पढितला intended national determined contribution माने कौन प्रति कंट्री प्रॉमिस करिवे जे तांकर intended national determined contribution माने कौन केते तांकर कार्बन एमिशन को से माने रिड्यूस करिवे intended माने कौन हमें कहूच प्रतिज्ञा करी कहूच जे हमें एतिकी प्रॉमिस करके कहूच हमें हमारा इंटेंशन होची जे एतिक परसेंट हमें कहूचे धर 40% हमारा कार्बन रिड्यूस करिबा 2005 रे जेतिक हमारा रिड्यूस थिला कार्बन एमिशन 2030 बेल को तार 40% रिड्यूस कर देबा तो एटा इंडिया रा प्रॉमिस ओके
Intended National Determined Contribution INDC full form mane rakhibo. Okay, तो एटा कोन ना both of them fall under UNFCCC. ओके आमे कहले ना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये ही हमरो क्लाइमेट चेंज एक्टिविटी जोड़ा को निये एंड हमरो कॉफ जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इथिर आसे और लाटेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हमरो कोडा ना कॉप 27 कोड हितला मन रखिबो इजिप्ट रो शर्मा शेख रे. ओके इजिप्ट रो परीक्षा रे पड़िबो एटा. ओके इजिप्ट शर्मा शेख. ओके शर्मा शेख लिखियो यार. ओके शर्मा शेख तो हमरो कॉप 27 गला कॉप 28 कोठी आसीबो के जानि छ कॉप 28 कोठी आसीबो कॉप 28 हमरो कोठी आसीबो जदि के जानि छ कमेंट सेक्शन में को दुबई ना कोठी. ओके यूएई रे हबो. ओके नेक्स्ट कॉप 28 मन रखि दिबो यूएई. ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमर होची क्योटो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड ओनली डेवलप कंट्री टू रिड्यूस द एमिशन while Paris agreement रे कोन होची recognize that the climate change is a shared problem and called on all the country to set the emission target. Okay so Kyoto protocol is binding emission reduction target for developed country only. तो developed country मानन को बाध्य से माने तांको emission को reduce करिवे. Okay however Paris agreement is said to improve upon and replace Kyoto protocol. Second both of them fall under our United Nations Framework Convention on Climate Change जो थे कि हमारा क्योटो प्रोटोकॉल हमर कोन ना ग्रीन हाउस गैस उडा को रिड्यूस करिवार अछि जेमति कि हमें कहले कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन तापर नाइट्रस ऑक्साइड हला परफ्लोरोकार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो 6टा थिला बे 7टा नाइट्रोजन टेट्राफ्लोराइड तुम ओडे कहलो. ओके आ पेरिस एग्रीमेंट रे कोन थिला जे हमर टेम्परेचर टा को वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेफरेबल 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू हमर प्री इंडस्ट्रियल लेवल एथि के हमर रखिबार अछि. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 58. इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एक तो हमर ओपीएससी रे आर फुल फॉर्म पडितला आईएनडीसी रे फुल फॉर्म कोन इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन तो सेटा कोन intended national determined contribution by the country presently have no legal status as total of 40% the installed capacity of the electricity would be from non-fossil fuel under India's INDC target. Under the provision Paris Agreement, the country will be expected to submit an updated NDC every 5 years. कोडा इनकरेक्ट हमरो कहछि. ओके वेरी गुड अलिबा. ओके तो आंसर कोन हम हमरो नॉन ऑफ द अबव सबुडा ठीक अछि. देखो आईएनडीसी जो होछि प्रथम मन रखिबो कोन फुल फॉर्म इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. तो आईएनडीसी सबमिटेड बाय द कंट्री presently have no legal status. A total 40% of the installed capacity of the electricity will be from non-fossil fuel source under India's INDC target. Under the provision of the Paris Agreement, the country will be expected to submit an updated NDC every 5 years. तो एटा हमर
तीनटा एक स्टेटमेंट ठीक अच्छी तो डी है हमर करेक्ट आंसर। तो तापर मु जस्ट के तुमको कहि दोछि तो नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन और एनडीसी हो किंबा आईएनडीसी हो इंटेंडेड nationally determined contribution it is a non binding national plan तो कौन पे ना क्लाइमेट एक्शन पे including climate related target for greenhouse gas emission policy and measure government aim to implement the response to the climate change. Okay, so INDC submitted by the country presently have no legal status. There are only expression intended by the country जे एइथिरे केवल कंट्री माने कहबे जे हमें कोन करिवु बाध्य नै सेरा से फॉलो करिया पई किंतु कहबे जे जेमति इंडिया कहिछि जे हमर जेति की इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोडक्शन करिवु 40% हमर इलेक्ट्रिसिटी हमर कोन ना नॉन फॉसिल फ्यूल माने रिन्यूएबल एनर्जी हमें करिवु तो सेति में जेमति केले हमर सोलार रु करिवा विंड रु करिवा सो दैट कि हमर कार्बन एमिशन कम होबो ओके एंड तमरो तो ये 2030 सुधा जोटा कि 40% थिला एबे बढ़े देछि जे 50% ऑफ द इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हमर जो पंचाम रे एटा 50% हे जाछि ओके 2030 सुधा। थर्ड होछि जे अंडर पेरिस एग्रीमेंट countries expected to submit an updated NDC every 5 years which will represent a progression beyond countries their current तो एटा हमर तीनटा एक हमर करेक्ट अछि तो सेति पे नन ऑफ द एबव होछि हमर रॉन्ग किछि ना। In the context of carbon sequestration consider the following storage site used for CO2 are former oil and gas reservoir deep saline formation coal bed saline formation तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन माने कोन देखो कार्बन डाइऑक्साइड को आमे कोन करबा ना स्टोर करके रखिबा माटी तळे तमे रखि परिबो ऑयल एंड गैस रिजर्वर गुडा के रखि परिबो ओके so artificial sequestration is slow process as compared to natural sequestration iron fertilization of ocean can help in carbon sequestration कौन होगा आंसर कोडा करेक्ट पचारछि देखो 59 नंबर होछि फर्स्ट स्टेटमेंट हमर करेक्ट अछि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन माने कोन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन माने किछि नै कार्बन डाइऑक्साइड को हम एटमॉस्फेयर कलेक्ट करिवा माटी तळे नेकी छाडी दवा गोटे स्टोर करके रखिबा ओके तो माने कवर दे दवा हमें कहबा ओके मनीष को जंते पोती दो ना कि सेमिति कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके हमें स्टोर करके रखिबा अंडर द अर्थ पहुंचे तो एटा कोन होचे ना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करबा प्रथमे कार्बन डाइऑक्साइड को तापर देखि आर सरफेस तळे तमे देखो स्टोर करके रखिबो सो it is one of the method reducing the carbon dioxide in the atmosphere with a goal of reducing global climate change okay तो एटा कोउथिरे तमे यूज करि परिबो ना ऑयल रिजर्वर गैस रिजर्वर यूज करि परिबो कोल सीम सलाइन फॉर्मेशन ए सब गुडा के तुम यूज करि परिबो तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अछि सेकंड स्टेटमेंट जो अछि इनकरेक्ट अछि जे आर्टिफिशियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रेफर्स a number of process whereby carbon emission are captured at the point of production माने factory chimney and then buried okay the natural sequestration is slow process compared to जो artificial तो natural तो generally हमरा माने कोन धीरे धीरे हम automatically okay so thus artificial sequestration can complement the natural sequestration to achieve the goal तो हमें ये जो मोर स्टेटमेंट जो थिला हमरो जे आर्टिफिशियल sequestration is slow process compared to natural उल्टा
नेचुरल टा होची स्लो प्रोसेस देन आर्टिफिशियल तो आम कैप्चर कले तापर नहीं कि माटी तले छाड़दे तो फटाफट हम ओके और नेचुरल तो मन को जोटा हम एटा टाइम लगे सो आर्टिफिशियल सिक्वेस्ट्रेशन इज फास्ट प्रोसेस एज कंपेयर टू नेचुरल सिक्वेस्ट्रेशन तापर थर्ड स्टेटमेंट ठीक अच्छे आयरन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओशन कैन हेल्प इन कार्बन sequestration okay so कौन हम आंसर 1 and 3 इजबो ए क्वेश्चन पढ़िथिला तमरा कार्बन ट्रेडिंग पढ़िथिला तमरा ओके कार्बन ट्रेडिंग ऑलरेडी ओपीएससी रे पढ़िथिला मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करथिले तो कार्बन ट्रेडिंग कौन ओके तो फास्ट जो देछि पेरिस एग्रीमेंट हैज ए प्रोविजन ऑफ कंपलसरी नो कंपलसरी एटा वॉलंटरी ट्रेडिंग बिटवीन कंट्रीज टू मीट द एनडीसी गोल सपोज मु काली कहउतली जे नेपाल रो सपोज हमरो सरप्लस रे अछि नेपाल को हमें कोन कहले ना तमरो सपोज तांकू अलाउ अछि 100 जो 1 लाख 100 लाख और 100 लाख मेट्रिक टन और 100 मेट्रिक एग्जांपल दोछि सपोज 100 मेट्रिक टन किंतु से करूछंती केते ना 80 तमन 20 से हमर सरप्लस से रहले किंतु इंडिया को सपोज से 100 अछि 120 से यूज करछि त कोन होछि ना से एक्सीड करछि 20 त जोठी आमे जति की टारगेट अछि जदि ताठो एक्सीड करूछे जार टारगेट जति थिला से ताठो कम जदि एमिशन करछन त से सरप्लस रे अछन आमे ताठो सर्टिफिकेट किनिबा पई पैसा देके भी किन परिबा तो कार्बन ट्रेडिंग so carbon trading रे हमरो पेरिस एग्रीमेंट हैज ए प्रोविजन ऑफ कंपलसरी नो एटा हमरो वॉलंटरी ओके तो तापर होची इट इज अलाउ द नेशन व्हिच आर अनएबल टू मीट देयर रिडक्शन टारगेट टू परचेस कार्बन क्रेडिट ठीक अछि कार्बन ट्रेडिंग यूज ए कैप एंड ट्रेड सिस्टम ओके तो हमर कोन होबा आंसर ताले 1 टा तो भूल अछि 2 टा तो डेफिनेटली हमर ठीक अछि थर्ड देखो सो पेरिस एग्रीमेंट रे हमर कोन होछि ना अलाउ वॉलंटरी ट्रेडिंग बिटवीन द कंट्री टू मीट द एनडीसी ओके एटा कंपलसरी नहीं वॉलंटरी सो एनी कंट्री रिड्यूस more greenhouse gases than its target it can sell the emission reduction to another country जोटा कि इंटरनेशनल ट्रेडेड mitigation outcome ITMO बोली कहजे so it is not a compulsory provision एटा voluntary provision सेति पे फर्स्ट स्टेटमेंट सेति पे रॉन्ग अछि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट अछि कार्बन ट्रेडिंग began with Kyoto protocol under the certified emission reduction or CER बोली हम कहजे were issued to entities that are put the project on reduce emission like हमरो एटा रहला and the last statement होचे हमरा करे cap and trade common term for the government regulatory program designed to limit and cap a total तो ये थर्ड स्टेटमेंट पे हमरा ठीक अछि तो आंसर कोन हो ना 2 and 3 इज हमरा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज एटा जीसीएफ तमरा परीक्षा रे पढितला यूपीएससी प्रीलिम रे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज it is co statement correct this facilities works under World Bank to tackle the planet biggest environmental issue India is both a donor and a recipient of GEF serve as a financial mechanism for Stockholm Minamata and Montreal protocol
ओके तो प्रथम ये आगु वर्ल्ड बैंक अंडर रे थिला किंतु बाहर जाइछि परे so these facilities work under the world bank to tackle planet's biggest environmental issue तो एटा वर्तमान था अंडर रे नाही इंडिया इज बोथ ए डोनर एंड रेसिपिएंट ठीक अछि ओके जस्ट देखिए रोज तुमको एटा प्रथमे ए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज एटा कोन ना it is a financial mechanism that provide grant to the developing country for the project that benefit global environment and promote sustainable livelihood in the local community तो जनरली एटा गोटे हमर फंड टाइप रो तमरो फाइनेंशियल मेकानिज्म जो थिरे कि that provide grants to developing country जेहेतु डेवलप कंट्री माने ते पॉल्यूशन करके जाइछन्ती लाइक यूएस यूके तो डेवलपिंग कंट्री माने भी हमें भी चाहिए कोन इंडस्ट्री यदि हम इंडस्ट्री आड़ को कहूचे तो हमर कोन कार्बन एमिशन अधिक होचे जो थिरे कि हमर कोन ना क्लाइमेट चेंज होबार बहुत चांसेस अछि तो हमको कोन करा हो ना डेवलपिंग कंट्री जो तांकर डिफरेंट हमर क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट जेमति कि हम कहले सोलार प्रोजेक्ट हैला विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हैला तो सेही भले हमर प्रोजेक्ट जदि इन्वेस्टमेंट करछन्ती ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज रु तमे बेनिफिट नहीं परिबो तो एई जो 1994 रे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जोटा कि हमर वर्ल्ड बैंक रे आगु थिला ये सेपरेट हे केबे परमानेंट एंड सेपरेट इंस्टीट्यूशन हमर अछि किंतु वर्ल्ड बैंक भी एबे भी तांकर एडवाइजर पोजीशन अछंती तापरे इंडिया इज बोथ ए डोनर एंड रेसिपिएंट ऑफ जीसीएफ तापरे तमरो थर्ड स्टेटमेंट होची इनकरेक्ट हमरो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जोटा फाइनेंशियल मेकानिज्म फॉर द फॉलोइंग जोटा हमरो सीबीडी कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू डेजर्टिफिकेशन तो आप ही हमरो होची कोन ना हेल्प होची तो ये जो स्टेटमेंट हमरो थर्ड स्टेटमेंट है the answer kon hobo na only 2 is the correct answer next consider the following statement about graded response action force टिके क्वेश्चन लेंथी अछि सब गुडा को बट डोंट वरी हमें ई लेवल ऑफ क्वेश्चन करले इजीली अन्य गुडा काम हे जिवो graded response action force works only as an emergency measure. The plan is incremental in nature. Graded response action plan is to implement across all the states in India, including Jammu and Kashmir. देखा कोडा करेक्ट पचारिछि तो एक तो होछि ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स एक्शन प्लान तो एटा केतेबेले न जदि अधिक पॉल्यूशन हे गला जनरली सपोज हमरो एयर पॉल्यूशन अधिक हे गला एयर पॉल्यूशन हमरो हम कहितले ओटे पीएम 2.5 और पीएम 10 तो जदि हमरो दिल्ली केस रे सपोज अधिक जदि हमरो पॉल्यूशन हे गला त हमरो स्कूल कॉलेज ए सब बंद हे जाय ओके ना नहीं तो तापरे एटा कोडी कोडी इंप्लीमेंट हेतला तो ताको जस्ट मु तुमको देखिए दोचे so graded action plan was notified in 2017 for Delhi and national capital region तो जो हमें पहुंचे तो एटा कोन पई 2017 रे आस्थिला दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर रीजन ए करिया पे तो these are the institutionalized measure to be taken when air quality deteriorate तो जेतोले हमरो एयर पोल्यूशन बहुत खराब लेवल को पड़ाउची द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड तमर दिल्ली भी आसुची ओके तो सेति पे द प्लान डज नॉट इंक्लूड action by various state government to be taken throughout the year to tackle industrial vehicular and combustion emission तो एटा हमर फर्स्ट स्टेटमेंट हमर कोन ना ठीक अछि तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमर ठीक अछि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन फोर्स action plan जोड़ा हमर रहला तो include measure which will be taken by different government agency to prevent हमर air quality जो धीरे धीरे deteriorate होची ताको केमिति हमें
prevent kariya, particularly prevent PM10 and PM2.5 level to go beyond a moderate national air quality index anusare. Okay, if the air quality reaches severe stage, the graded action plan talk about short. जदि हमर अधिक एयर पोल्यूशन हे गला तम स्कूल कॉलेज छुट्टी हे जाउची, shutting down of the school and implementing odd even number scheme तमरा अरविंद केजरीवाल कर गोटे दिन हमरा इवन नंबर गाड़ी चलिबो, गोटे दिन ऑड नंबर गाड़ी चलिबो, तो ई सब गुडा एक्शन निया जाई छी. ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट होची, तो थर्ड स्टेटमेंट में हमरा इनकरेक्ट अछि, कारण the plan required action and coordination among 13 different agency in Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan. तो एमिति हमरा 13टा different agency अछि. Okay. So 1 and 2 is the correct answer. Okay, correct answer कौन होगा ना 1 and 2 is the C is the correct answer. Okay. So मैं few previous year question जोड़ा करूँ भी सेटा मुझे करिबा. Previous year question जोड़ा मैं करूँ. मते फटाफट कहबो काली जो आमे कहउथले. एठो डिस्कशन करथले एठो मते को. India has committed to reduce the emission intensity of its GDP from 2005 level by 33 to 35% by which year? 33 to 35% को year सुधा एटा हमरा हबो ना हमरा 2030 सुधा. ओके, माने रखिबो 2030 सुधा हमरा जीडीपी रो हमरा कोनो हमें इंडिया हैज कमिटेड हमर जो आईएनडीसी हमें कहचे इंटेंडेड नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन रे हमें कहिले जे आम जीडीपी रो जति कि हमर हमें एमिशन इंटेंसिटी अछि, कारण हमर जीडीपी माने कोन हमर इंडस्ट्री रो डेवलपमेंट जो हमर जीडीपी बढ़ुचे, तमरा हमें कहबा प्लांट मशीनरी ए सब गुडा को जोगु हमर कोन हो जे प्रोडक्शन हो जे से थ्रू ही हमर प्रोडक्शन जोगु ही हमर जो इकोनॉमी रो ग्रोथ होची. तो सेही में जो प्रोडक्शन बेले हमर जो इलेक्ट्रिसिटी हो कोयला को जाली कि से इलेक्ट्रिसिटी यूज होचे, तो कोई हमर जीडीपी रो ग्रोथ रे हमर एमिशन भी हाथ अछि. तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, तो से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को हमर इंटेंसिटी को कमा जिवो 33 रु 35% बाय व्हिच ईयर, जोटा कि 2005 लेवल रे करथले तार 33 रु 35% हम रिड्यूस करबा 2030 सुधा. तो आंसर हे जिवो कोन बी इज द नेक्स्ट. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो एटा परीक्षा रे पडितला. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर कोन ना एटा होची तमरा गोटे एक्वेटिक इकोसिस्टम रे केते पॉल्यूशन अछि, कारण एइथरे तमरा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कोन ना तमरा पॉल्यूशन जदी अछि तो ताकू हमरा कोन ब्रेक डाउन करा जिवो. तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल गुडा को ब्रेक डाउन करिया पे बैक्टीरिया, तो जदी ब्रेक डाउन कला बेले तांको ऑक्सीजन दरकार. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर पॉल्यूशन असेस इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. तो हमरा सी हिजबो करेक्ट आंसर. ओके,
तो मन रखी द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द सैंपल ऑफ वाटर जोड़ा को हमें कहूचे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोली हमें कहूचे बीओडी. ओके नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द एजेंडा 21 ऑफ द रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू. तो एजेंडा 21 हमें कहले 1992 रो समिट कोड हितला ना ब्राजील रियो डी जेनेरियो रे और तमर एटा को आर समिट बोली कहूचे रियो डी जेनेरियो समिट बोली कहूचे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट बोली भी कहूचे. तो ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट रो गोटे रिपोर्ट बाहर के आसीबो से रिपोर्ट रो ना होचे एजेंडा 21. ओके सो एजेंडा 21 जोटा कि आउटकम ऑफ रियो समिट 1992 दैट आर रिलेटेड टू कोन थिला ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमर थिला. करेक्ट आंसर ए हिजबो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 क्वेश्चन पढ़ी ओपीएससी रो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रो तार करेक्ट लोकेशन कोठी ना हमें देखिथिले तो जबलपुर होचे हमर करेक्ट आंसर. ओके तो जबलपुर होचे हमर करेक्ट आंसर. तो बी होचे करेक्ट आंसर हमर जबलपुर. ओके तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन TFRI. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फनल स्पीशीज दैट इज बीइंग कंजर्व्ड एंड मॉनिटर्ड इन डिचगांव नेशनल पार्क. तो डिचगांव नेशनल पार्क रो की फनल स्पीशीज कौन. डिचगांव नेशनल पार्क टा कोठी अछि तमे एटा जानछे जम्मू एंड कश्मीर अछि. तो जम्मू एंड कश्मीर हले कोन हबो काश्मीर स्टैग और हांगुल होचे हमर करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. आ भितरु कोटा यूनेस्को रो वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे नाही. तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे कोटा नाही. देखो तमरो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे काजीरंगा अछि, सुंदरबन अछि, केवलादियो अछि, कान्हा नेशनल पार्क टा हमरो नाही. ओके कान्हा नेशनल पार्क टा यूनेस्को रो वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे हमरो नाही. तो आंसर कोन हबो डी हिजबो. ओके तो आंसर हबो तो देखो वर्ल्ड रो हेरिटेज साइट रे सातटा अछि. गोटेला ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जोटा हिमाचल प्रदेश रे अछि, वेस्टर्न घाट जोटा हमरो सातटा ये रचु छटा रे अछि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आउ गुजरात भी. ओके गुजरात एठी देनी गुजरात भी परीक्षा रे पढितला एटा ओपीएससी प्रीलिम रे गुजरात भी. तापर नंदादेवी वैली ऑफ फ्लावर्स हला, सुंदरबन जोटा कि वेस्ट बंगाल रे अछि, काजीरंगा आसाम, केवलादियो राजस्थान मानस. ई सातटा एक तमे मन रखिबो जोटा कि वर्ल्ड रो नेचुरल हेरिटेज साइट रे हमर अछि. ओके कान्हा जोटा कि नाही जोटा कि मध्य प्रदेश रे. ओके नेक्स्ट तो तोरा छाड़ी दियो कारण सेते बेला हमर थिला हमर कप 13 जोटा हमर हेइथिला जो CMS कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज कथा में कहूचे एटा हमर गांधीनगर रे हेइथिला. तो छाड़ी दियो एटा गांधीनगर रो. तो ई कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज सेटा हमर मन रखिथिबो रिलेटेड टू बर्न कन्वेंशन बोली कहूचे बर्न जर्मनी रो. तो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज और गोटे wild animal also known as the convention of the migratory species or bond convention बोली कहजे. बॉन्ड टा कोठी ना हमरा जर्मनी रे. ओके सो इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट
that aims to conserve the migratory species within their migratory range. Okay, तो एटा हमर जर्मनी आउ एथिर ऑफिशियल मास्कट थिला कोन ना तमर एउटा हमर कोन एटा कहूचे ना जीआईबी. ओके जीआईबी कोन ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोली हमें कहूचे. तो राजस्थान रो स्टेट बर्ड ये तो तापे प्रोजेक्ट हमर तो आम ओपीएससी जो यूपीएससी तीन क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ी सारे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जे कि क्रिटिकली एंडेंजर आउ राजस्थान रो एटा को हमर कहुए को गोदवाना बोली भी हमर कहुए. ओके तार ऑफिशियल मास्कट मन रखि था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जोटा ऑफिशियल मास्कट जोटा थिला. ओके तो आंकर नंबर एबे लेस देन 100. ओके तो लेस देन 100 90% ऑफ द पॉपुलेशन एमानकर डिक्रीज करि गलानी लास्ट 50 इयर्स भितरे. तो मन रखिबो एटा हमर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रे अछि तापर साइट्स रे अछि क्रिटिकली एंडेंजर आईयूसीएन रेड लिस्टेड हमर अछि. तो एटा होछि राजस्थान रो स्टेट बर्ड. जनरली राजस्थान और गुजरात रे माने मेजॉरिटी नंबर देखा जाए. अदर पार्ट महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश भी देखा जाए. डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान जोटा कि मोस्ट प्रोमिनेंट हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ओके ओके तो एमाने सेवान ग्रासलैंड लैंडस्केप इन द वेस्टर्न नेचुरल हैबिटेट. वेस्टर्न लोकली नो आकु गोदवाना बोली कहा जाए. ओके फ्लोरिश फॉर द इयर्स ऑफ दिस ग्रासलैंड. तो आमर राजस्थान गवर्नमेंट आमर 2013 रे गोटे प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से गोटे लॉन्च करिछि कोन पई ना एम टू कंस्ट्रक्ट ब्रीडिंग एनक्लोजर फॉर द स्पीशीज एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस ह्यूमन प्रेशर ऑन द हैबिटेट. ओके तो ये तुम मन रख. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम रा ना कौन. वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम होची पांटाना. तो एटा मन रख. ओके पांटाना जोटा कि हमारा कोटे अच्छी वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड पांटानाल जोटा कि कवर 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ड्यूरिंग द वेट मानसून थ्रू ब्राजिल पाराग्वे बोलिविया. सो एठी कौन although हमारा 40% of the ब्राजिल हमारा इतरे the land of folded grassland savanna tropical forest इतरे हमारा अच्छी. ओके तो पांटाना मन रखिबाटा ब्राजिल पाराग्वे बोलिविया तीनटा को स्प्रेड करके हमारा अच्छी. एटा भी हमारा परीक्षा रे पड़ितला व्हिच of the following environmentalists first gave the concept of biodiversity. प्रथमे biodiversity हॉटस्पॉट रो कांसेप्ट को किए देले. ओके कौन हम आंसर आर वेरी गुड. ओके परीक्षा पड़ितला तो मन रखिबो नॉर्मन मेयर. तो ये प्रथमे जे कि कांसेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी नहीं के आस्थिले बी होच हमर करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग मल्टीलैटरल कन्वेंशन स्पीक टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एनवायरनमेंट फ्रॉम persistent organic pollutant or POPs. सो एटा कौन हबा हमरा बी मन रखिबा स्टॉकहोम कन्वेंशन. The Stockholm Convention is related to POPs, persistent organic pollutant or POPs बोले हमें कहूचे. मॉन्ट्रिक्स रेकॉर्ड परीक्षा रे पड़ितला. मॉन्ट्रिक्स रेकॉर्ड इज ए रजिस्टर्ड ऑफ तमरा इन्वेसिव एलियन स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल नहीं एटा नहीं तमरा wetland site under the threat of anthropogenic activities due to human interference जोगु human encroachment जोगु जो wetland गुडाकर condition धीरे धीरे deteriorate होची. So wetland site under the threat of anthropogenic activities. Okay तो आंसर कौन हबो ना बी हेजबा हमरा करेक्ट आंसर.
Which among the following chronic lung diseases commonly known as black lungs disease leads to reduced life expectancy in the coal miner? तो जो मैंने कोल माइन भितर को जाउछन सेमानकर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाए कौन पे ना वन टाइप ऑफ हमर डिजीज हुए जाको कोचे ब्लैक लंग्स डिजीज तो जेहेतु कोयला खनि रे हमर काम करूछन सेमान को हमर कोन ना विथ रेस्पिरेशन हमर लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल ऑफ द कोल जदी जाउछन गोटे डिजीज होची तो तार ना कोन ओके एटा लास्ट क्वेश्चन हमर तो आंसर कौन हम ना ए हिजबा हमर करेक्ट आंसर ओके pneumoconiasis ओके आंसर हम डी ए हिजबा हमर करेक्ट आंसर pneumoconiasis Which among the following award instituted by Government of India for individual or community for rural area that have shown extraordinary courage and dedication in protecting wildlife? तो एडा कौन हम तो आमर एटा ओके मन रखिबो अमृता देवी विष्णुई अवार्ड एटा को हमर कहा जाय तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड्स है अमृता देवी विष्णुई अवार्ड्स instituted by Government of India for individual and community for rural area that have shown extraordinary courage and dedication in protecting wildlife तो एटा अमृता देवी विष्णुई अवार्ड हमें दौचु थिकनेस ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन हमें कहि देथिले डॉप्सन यूनिट रे हमें मेजर करूचे तापरे कार्टेजना बायोसेफ्टी कार्टेजना प्रोटोकॉल इज रिगार्डिंग टू हमर सेफ्टी यूज ट्रांसफर एंड हैंडलिंग ऑफ कार्टेजना बायोसेफ्टी कौन एटा रिलेटेड सी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमरो तमरा जो मन पका जीएम जो मॉडिफाइड क्रॉप्स जोड़ा कला नागोया प्रोटोकॉल कार्टेजना प्रोटोकॉल आउ हमरो okay so Cartagena protocol of biosafety on convention of biological diversity was adopted on 29 January 2000 as a supplementary agreement to the convention of biological diversity तो एटा रिलेटेड टू हमर कोन ना लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ओके लायंटल मकाल हमें खाली कहिथिले तो एटा नीलगिरी रो गोटे होचे हमर कोन ना पार्ट Next, which one of the following is not among the 4 coral reef region in the India identified government for intensive conservation? Gulf of Mannar, Khambat, Lakshadweep, Andaman. तो कौन हमार आंसर बी हिजबो गल्फ ऑफ खंबात जोटा कि हमर नाही आउ सब गुडाक गल्फ ऑफ मन्नार हला लक्षद्वीप हला अंडमान निकोबार हला ए सब गुडाक आइडेंटिफाइड फॉर द by the government for intensive conservation and management of coral reef ओके तो कोराल रीफ फाइन ओके सो ठीक अछि तो बाकी जोडा को रहिला हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिबा सो कीप गोइंग गाइस लास्ट जो हमरो रहिला 3-4 आउ जोडा को रहिला हमें ताको नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन कर दबा ओके तो तमे मेजर जिंस हमरा कोन होची ना जो जो मॉक टेस्ट देखा जो क्वेश्चन गुडा हम कर डिफिकल्ट अच्छी ओके किंतु
मेजर क्वेश्चन तुम कौन हो ना तुम कॉन्सेप्ट रिलेटेड तेणु तुम कर जदि मॉक टेस्ट आ प्रीवियस क्वेश्चन कर दौच दैट इज एनफ तुम आराम से आमर प्रीलिम आम क्लियर कर दवा ओके ठीक अच्छे थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट टू ऑल